सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural I've exchange. watched as you have been an important Pakistan has a future to play in the whole world. आपके कारनामों, आपकी कामयाबियों, एहसासात, ख्यालत पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. समाजी, सखाफती, इस्लामी और सियासी राब्तों का एक नाम सफीर पाकिस्तान। Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है और ये आपकी अपनी आवाज़ भी है। नाज़रीन, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर आपके शहर में कोई इवेंट हो रही है तो हमें उसकी फ़ुटेज ज़रूर भेजें। आपको पता है कि अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और हर सिटी और शहर में हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन आपका ताउन दरकार है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान जिस तरह पूरी दुनिया और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से बहुत परेशान हैं और जिन हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है और जो मुसीबत पाकिस्तान पे आन पड़ी है, सैलाब की, फ्लड की, उससे तबाहकारियाँ जो हैं वो हिमंगस हैं, जिसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। उसी सिलसिले में आज हमने एक प्रोग्राम शामिल किया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को देखेंगे और गौर करेंगे कि आप किस तरीके से ख़ुद अपने उन दुखी, परेशान हाल भाइयों की मदद किस तरीके से कर सकते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आज का प्रोग्राम पेश करूं, आइए देखते हैं उस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। मुलाज़ा फरमाइए। आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है। नाज़रीन, यूँ तो पाकिस्तान कई मुसीबतों से गुज़र चुका है। अर्थक्वेक की तबाहकारियाँ, सवात में तबाहकारियाँ, आप सैलाब की तबाहकारियाँ, और ये तबाहकारी जो है ये सुनामी और कैटरीना से कहीं दुगनी और चौगनी है। नाज़रीन, तकरीबन हाफ ऑफ द पाकिस्तान जो है वो पानी में डूबा हुआ है, आहो बका है चारों तरफ, फसलें तबाह हो चुकी हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लोग हलाक हो रहे हैं, लोगों के घर नहीं हैं उनके पास, अब वो अपने घर खो चुके हैं, स्कूल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं, रेलवे ट्रैक्स जो है वो तबाह हो चुकी है, कुछ नहीं रहा। हमें एक नया पाकिस्तान बनाना होगा, वहाँ पे हमें एक नई तामीर नौ करनी होगी। नाज़रीन, मुझे
वही समय याद आ रहा है कि जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जिस तरीके से तबाह व बर्बादी फैली, कितने तरीक़ों से लोगों को कत्ल किया गया, ज़बह किया गया, बर्बाद किया गया, अपने घर बार छोड़ के पाकिस्तान आए और वहाँ आबाद हुए। और 63 साल की ज़िंदगी में ये सबसे पहला ऐसा वाक़या है कि इतनी हौलनाक तबाहकारियाँ फैली हैं कि जिसकी रूए ज़मीन में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, हम तमाम पाकिस्तानियों का, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे बढ़ें और मदद करें। सिर्फ मदद की ज़रूरत है। नाज़रीन, मदद जब मैं कहता हूँ उसमें पैसा भी आता है, खाने की चीज़ें भी आती हैं, दवाइयाँ भी आती हैं और फ़िज़िकल हेल्प भी आती है। नाज़रीन, मैं बता नहीं सकता हूँ, अगर आप आज की फुटेज देखेंगे और आज का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में किस कदर तबाहकारियाँ फैल चुकी हैं कि ये वो दास्तान है जिसको बयान करते करते दिन और साल भी गुजर सकते हैं। इतनी तबाहकुन ये बर्बादी है सैलाब से, नाज़रीन मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब जो चैलेंज है हमें, वो चैलेंज ये है कि तामीर नौ, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ दोज एरिया which is affected with the destruction of flood। नाज़रीन, इसको बनाना, इसकी तामीर नौ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पैसा भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, ज़राए भी चाहिए और एक डेडिकेटेड टीम भी चाहिए, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड टीम, कि उन गलियों को संवारा जाए, उन सड़कों को बनाया जाए, उन पुलों की दोबारा तामीर की जाए जिनसे आने जाने का रास्ता बने, उन खेतों को दोबारा सही किया जाए और जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं उनको उसका मुआवजा दिया जाए, जिनके मकान तबाह हो गए हैं उनको उनका क्लेम दिया जाए। ये सब चीज़ें होनी हैं ऑल द वे। और जो हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्कूल तबाह हो गए उनकी दोबारा तामीर होगी। नाज़रीन, तो ये पूरा एक प्रोसेस है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पाकिस्तान और इसके लिए हमें मुसलसल रात दिन काम करना होगा। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं उनको आगे आना होगा, उनको आगे बढ़ के आना होगा और मदद करनी होगी इस कार्य खैर में। हुकूमत, ऑफ कोर्स हुकूमत के जितने भी रिसोर्सेज हैं, हुकूमत में एक फ़ौज है जो काम कर रही है, लेकिन फ़ौज के पास कोई सरमाया नहीं है, ना फ़ौज के पास दौलत है। फ़ौज के पास टेक्नोलॉजी है, मेहनत है, उनके पास तरीक़ेकार है, उनके पास हौसला है, वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली यू नीड गैस एंड फ्यूल टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। नाज़रीन, आज मैं तमाम अपने उन दोस्तों से, उन भाइयों से, उन बहनों से, उन बच्चों से अपील करता हूँ जो आज ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं कि आगे बढ़ें, मदद करें और डोनेट करें। आप ये देख रहे होंगे इस टीवी पे, स्क्रीन पे, कि जहां आप अपने पैसे भेज सकते हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी ये भेजी हुई रकम सही जगह पहुंचेगी। मेरा काम है पैगाम पहुंचाना, मेरा काम है आपको एहसास दिलाना, मेरा काम है आपको एक सही तस्वीर दिखाना, मेरा काम है लोगों के पैगाम आप तक पहुंचाना और हकीकत पे मबनी चीज़ें आपके सामने पेश करना। मैं यही कर सकता हूँ, मैं ये कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ और मैं करता रहूँगा। आज के बाद से हर प्रोग्राम में आप देखेंगे ये मेरा मिशन होगा कि जब तक वो बर्बाद और तबाह हाल लोग अपने घरों को वापस नहीं पहुँचते, अपनी ज़मीनों पे वापस नहीं पहुँचते, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। मैं हर वक्त, हर लम्हे, हर दम जहाँ जहाँ मेरे रिसोर्सेज हैं, ख्वाह वो अमेरिकन सोसाइटी हो या अमेरिकन कांग्रेसमैन हो, सेनेटर्स हो, मीडिया हो, थिंक टैंक हो, कम्युनिटीज़ हों, मैं उन तक पहुँचूँगा, उनसे भीख मांगूँगा कि खुदारा हमारे मुल्क की मदद करें, आगे बढ़िए। और मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं 15 साल से ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। 5वां साल मुझे जियो पे है, 5 साल मैं PTV पर रहा हूँ, 5 साल मैं अमेरिकन चैनल पर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी आपसे कोई दादो फरियाद नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा आपसे मैंने, कभी मैंने कोई चीज़, अपनी प्रोडक्ट नहीं बेची, कभी मैंने कोई रियल एस्टेट, कोई चीज़ नहीं बेची अपने टीवी पे। हमेशा लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है
और पाकिस्तान की इमेज को बहाल ही किया है। मैंने टीवी चैनल या स्क्रीन कभी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया और ना मैं करूँगा, मेरा वादा है आपसे। लेकिन आज आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप ज़रूर आज डोनेट करेंगे, आज आगे बढ़ के मदद करेंगे, और आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान के लिए दर दर की भीख मांग सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं अपने मुल्क के लिए भीख मांगने के लिए, क्योंकि वो मेरा वतन है, उसने मुझे पहचान दी है और वो मेरा डेस्टिनेशन भी है। वो मेरी मट्टी है जहाँ पे मैंने जन्म लिया है। मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? उस मट्टी से मुझे प्यार है और उस मट्टी का जो कर्ज़ है और जो एहसान है मैं भूल नहीं सकता, मैं चुका नहीं सकता हूँ। आज जो दुनिया में जहाँ जहाँ डॉक्टर आबाद हैं उनको डॉक्टर बनाने में पाकिस्तान ने अहम और कलीदी किरदार अदा किया। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछें कि उसने अपनी तालीम हासिल करने के लिए कितना पैसा दिया है, तो ये ना होने के बराबर है, बल्कि मुफ्त उस गरीब तरीन मुल्क ने लोगों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, मुफ्त। अब अमेरिका में डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनते हैं और कितना पैसा खर्च होता है। तो आपका फ़र्ज़ है कि आगे बढ़िए, सपोर्ट कीजिए। आइए नाज़रीन, तो आपके लिए चलता हूँ आज के भरपूर प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोग्राम पसंद करेंगे और आप आगे बढ़ के मदद करेंगे। मुझसे वादा कीजिए, जो जो मेरे टीवी देखने वाले हैं, जो जो मेरे प्रोग्राम देखते हैं सफ़ीर पाकिस्तान, जो आज स्क्रीन के सामने बैठे हैं, वो आगे बढ़ें, मदद करें। $5, $10, $1, जो भी है, आगे बढ़िए और मदद कीजिए। नाज़रीन, इसके अलावा हम खुशामदीद कहेंगे हमारी न्यू कौंसल जनरल रिफ़त मसूद जो हैं, वो उन्होंने चार्ज संभाल लिया है लॉस एंजल्स का। शी वाज द डिप्टी हाई कमीशन इन इंडिया और अनकरा में भी रह चुकी हैं। बहुत तजर्बाकार और सीनियर डिप्लोमेट है, लंदन में भी रह चुकी हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, कज़लबाश हैं ये, और बहुत ही एजुकेटेड हैं और बहुत ही अच्छी सुथरी और साफ़ ज़हनियत की मालिक हैं। और उनका कहना है कि उनके दरवाज़े हर आम ख़ास के लिए खुले हुए हैं और वो किसी भी पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी को लीड नहीं करती हैं, वो सिर्फ अपने मुल्क को लीड करती हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। तो आज उनसे भी आपकी मुलाकात होगी इसके प्रोग्राम में। आइए, लता फरमाइए ये रिपोर्ट। आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है। Tonight we want to bring the attention of the whole world, and especially American world, to this crisis. We are arranging a charity fundraising event tonight, but before that we are holding this press conference where we are humbled to have so much support from all angles, including congressional, city, state, political, Hollywood, entrepreneurs, and social circles. What media can do, nobody else can do. If we can spread this word to the people, the devastation. We need to show our hearts, show our compassion, reach in our pocket, and do our very best to respond to this terrible tragedy. So thank all of you for caring, thank all of you for giving, and for doing what God would want us to do, to reach out to our fellow human beings who are in need. Pakistan is underwater and 25 million people are affected, which is more than the entire population of some countries such as Taiwan, which is 20 million, or Afghanistan, and almost equal to the population of Iraq. 10 million people have been displaced. People are living day to day. People are starving. People don't have shelter. People don't have proper clothing. Fortunately, the world community is coming forward thanks to worldwide efforts. But Los Angeles is also going to come forward in a great way and has been. Dr. Mahmood has been there to Pakistan before when other disasters have occurred, earthquakes included. And I think the key is showing solidarity for a very important cause. And all of us here are just pleased that so many people are showing up in this great hotel to show support for the people of Pakistan. Thank you very much for the leadership. This is important for the people of Pakistan. It's important for the people of Los Angeles who see this tragedy unfolding day after day and say, we've got to be there to help. And with this association of physicians of Pakistani descent, we know that aid is going from Los Angeles in skilled hands, not just money, but knowledge. This tragedy has already caused homelessness and injury that exceeds the Indian Ocean tsunami, the 2005 Kashmir earthquake,
and the 2010 Haiti earthquake combined. It is time for us as a human family to step up. The UN said that we are hundreds of millions of dollars short in pledges that we need, and it starts where? Well, right here, in our own backyards, in our own workplaces, in our own communities. And we certainly, from the City of Los Angeles, will be posting places that people in Los Angeles can give money. And I do want to think the most important thing that I can say is actually the website that people can visit to donate. So please visit appna-socal.org. I'll say that again. It's www.appna-socal.org to get involved and to take action. Los Angeles loves Pakistan. We know that Pakistan loves Los Angeles, and now it's time to make sure that we prove it. Thank you. I never see you crying with tears when you are asking the money from the American community. So what message you are taking away from this press conference? I'm encouraged. I hope that people will donate. I'm hoping that people will open up their hearts and their checkbooks and give to the people of Pakistan. I'm very happy tonight that ordinary Americans are reaching into their pocket to help people who are victimized halfway around the world. And Lord knows we have problems here at home. People are suffering, they're out of work, and many of us are responding with checks. But when another fellow human being is victimized by this incredible, massive flooding, you just have to show your compassion and your humanity. And I think the money will help. And the fact that Americans care about people halfway around the world, I think, is a very positive message. You will hear time and again tonight about the extent of tragedy which started from Himalayas and went all the way about 1,400 miles to Indian Ocean. That water swept away thousands of small villages to towns to cities. 25 million people as of yesterday have been affected. Over 10 million people have been displaced. And those 10 million people do not have any bright hope to go back to those homes because those homes are either wiped away or so badly damaged that they are not livable. At this point, for them to find a small space to sleep, to find minimal amount of food, and to find clean water is a great challenge. We have to come up and come forward to see those people with the eyes of humanity, not with the eyes of black or white or brown, but with the eyes of passion and sacrifice. Ladies and gentlemen, we can miss a meal, we can miss a movie. Maybe we should not buy a pair of shoes this week, but few dollars can save starving kids. Because right now, I think all of us probably emotionally are at the same point. How, for a moment, can you begin to feel the pain and the suffering, not just of 100,000 people, but 1 million or 10 million or 25 who have been affected, 25 million people? In the Talmud, there's a question that's asked, if you had $100, to make it in current terms, should I give the $100 to one person, or should I give $1 to 100 people? What is the right answer? What is the ethical thing to do? And in the Talmud, the rabbi who's asked this question answers by saying, well, of course, you have to give $1 to 100 people. Because life on earth is about always giving whenever we are asked. Not to be overwhelmed by each one of these disasters. It's Haiti this week, and it's Pakistan another week, and suddenly it's New Zealand this week, and Chile another. How can I ever make a difference? I'll have to choose one or the other. It's about giving something small always. And the United States, I'll end with this, may be the last or the lone superpower on this earth. But we are a nation of immigrants, some of us willing and some unwilling, who were brought here. What better way to honor our own tradition than to help those migrants who are now displaced by this disaster? And what better way to prove that we are a superpower, not by the might of our economy or the size of our military forces, but by the generosity of our hearts? And as I said at the press conference, I know Pakistan loves Los Angeles. That is manifest in this room. But I know that tonight, Los Angeles loves Pakistan as well. Thank you very much. That defies human explanation.
Amidst the disaster, I think we can be proud of our government's response. The U.S. has contributed $200 million to the relief efforts to date, with $150 million going to support immediate relief efforts and $50 million ahead allocated for the initial recovery efforts. 19 U.S. helicopters are on a rotation to assist flood victims. These helicopters have already evacuated more than 10,000 people, delivered more than 2.7 million pounds of food. The U.S. is building temporary bridges, and it has contributed more than 500,000 halal meals. In summary, the U.S. relief efforts have been Herculean, but they're not enough. Absent long-term recovery efforts, Pakistan will remain awash in the the same troubles, as Dr. Mahmood mentioned, that gave rise to the insurgency and will still plague current relationships between the U.S. and Pakistan. This isn't just a humanitarian crisis. It is, as Ahmed Rashid notes, an unparalleled national security challenge for both Pakistan and the United States. In a poll last spring, 84% of Pakistanis were dissatisfied with the way things were going in their country. 84%. That was before the floods. Meanwhile, Americans and Pakistanis have unfortunately increasingly negative views of one another. Despite $18 billion in military assistance, 60% of Pakistanis think of the U.S. as an enemy, according to a Pew poll. Today, the floods, like the Asian tsunami of 2004, threaten to seriously retard Pakistan's economic growth, overwhelming that country's already unstable infrastructure. Although I'm not convinced that radical groups like Jamaat-ud-Dawa or LET will immediately benefit from the floods, as alleged by some members of the Pakistan's government, I'm very concerned that the floods will irreversibly destabilize Pakistan. We cannot let that happen. It is imperative the United States look beyond just a relief effort and work to help fix Pakistan's economy. Already working on the ground. You saw the video presentation. They say a picture is worth 1,000 words. You saw Pakistan suffering. You saw Pakistanis suffering. You saw the children suffering. Pakistan needs you. Pakistan has not seen such a calamity or disaster in its 63 years of existence. It's many times worse than Katrina. It is worse than the recent tsunami, or the Kashmir earthquake, or the disaster in Haiti. The affected area is the size of the state of Florida, or bigger. 1/5 of Pakistan is underwater, and 25 million people are affected, which is more than the entire population of some countries, such as Taiwan, which is 20 million, or Afghanistan, and almost equal to the population of Iraq, which is 27 million. As I stand before you, humbly I plead to you to give more, to give whatever you can. I know you have been to many fundraisers. All of us have. In the media, we hear this word, donor fatigue. Does any one of you in this audience have the courage to go back and tell the 25 million affected people we are suffering from donor fatigue? I don't. I, for one, do not even have the courage to look them in the eye because I believe that I have not done enough. And I will keep on pleading and begging and organizing fundraisers with your help because I cannot do it alone. Till Pakistan is rebuilt, till every displaced Pakistani has a roof over their head and every hungry child has been fed. So please, let us eliminate this word, donor fatigue, from our vocabulary.
Service to humanity and compassion are the founding principles of our faith. The time has come to show the world and our suffering brothers and sisters by practicing it. And you know, today is September 6th. It is not only Labor Day, but a very important day in the history of Pakistan. Let us show our fellow Pakistanis that we may be far away, but we have not forgotten them, and we will never abandon them. Try to reach and elevate what brings us for the common good. Our world is a closer place because of all these endeavors and feelings. We are all moved in this room by a deep sense of sorrow, but more importantly, we are united in our humanity, irrespective of ethnicity, faith, or heritage. We are all brothers and sisters. Regardless of our faith, we are all children of God. In the face of tremendous loss, we must respond with a measure, at least, or if not greater, of compassion and strength and a willingness to support those in greater need. In spite of the great economic difficulties that have faced Americans and Californians, we are still indeed very, very blessed to reside in this nation. We are the wealthiest nation in the history of humankind. But what makes us wealthy is not simply a number reflected in our financial accounts. What it is reflected in is our kindness and generosity. And so I beg and I ask of you to reach our common destiny, to bend history, and to make sure that we change through our ideas, through our approach, and most importantly, our actions, our humanity. And so I am very inspired and thankful for this invitation to join you. I just wanted to thank Tariq. I was so moved when I saw these accounts when I was on AOL. I emailed my friend Tariq and I just asked if I could help. I just wanted to reach out and help. And he has given me this opportunity. Howard Berman and Maxine Waters and Sheriff Lee Baca. I look forward to hearing from Lee and from Karen Bass, who will soon be elected to Congress, and we look forward to her coming to Washington. I also want to acknowledge three of my very close friends who are here. Shaukat Hussain from the Ismaili Council, Nadador Varham, and Edvard Hugopian, who donated that day's use of the Rolls-Royce. Edvard travels in style. As Americans, we should be proud that America is first among the nations in helping Pakistan at this difficult time. The immediate emergency assistance, the helicopters, the logistics, the emergency funding has been so important. But not only do we need this emergency response, in the medium term, Pakistan is going to need food aid because so much of its cropland is now underwater. And then in the long term, Pakistan will need our help to rebuild. And while we have done a lot, and while we must encourage other nations to do much as well, whatever we do is going to have a difficult time dealing with the scope of this disaster. 25 million people either injured or made homeless. The number of individuals affected, if you compare it to the Indian Ocean tsunami, the 2005 Kashmir earthquake, and the 2010 Haiti earthquake, more individuals have been affected by this flood in Pakistan than those three disasters combined. And that is why UN Secretary General Ban Ki-moon has described this as the worst disaster he's ever seen. And this is, unfortunately, just the beginning. I know we have so many physicians here who understand that now people have been put through such stress, their immune systems are weakened, and they face waterborne diseases. And that's why it's so important that we help the people of Pakistan today. Now,
America, I think, will be first among nations in providing that long-term aid, but it's not just a matter of governmental aid. America has always been first in voluntary contributions to help other countries in times of disaster. And that is why it's so important that on a people-to-people basis, we show the people of Pakistan that we care. And that's why I want to thank all of you for being here to come together and show Pakistan that Los Angeles cares and Los Angeles will be there to help. Who's equally Pakistani and American. I don't think Sheriff Baca needs any introduction. Please welcome Sheriff Lee Baca. All of our elected officials have been acknowledged, and I want to acknowledge them again, but I won't mention their names. We're here so that those of you that are Pakistani Americans can get a taste of the reality that elected officials from your great county of Los Angeles care about you. And I hope that we give Congresswoman Waters a chance to get up here after me. So I'm pitching for her next. But the other thing you can do is something for yourself as you give to Pakistan. When I was in Karachi 20 months ago, the gift I was given as a gesture of goodwill was the finest bed sheets in the world. 600 counts per square inch on the thread. Now, you women know what I'm talking about. If you guys don't know what I'm talking about, let me introduce you to the fact that when you sleep tonight, you have the opportunity to sleep on the finest cloth in the world, and it's from Pakistan. What you don't know is the package that I got in Karachi was prepared for Penny's department store. Why is it that Pakistan sells its best fabric, which can compete with any fabric in the world, to Penny's? And I'll tell you what the answer is. America has a tariff on the cloth that is sold to America from Pakistan, but does not have a tariff on the cloth that's sold to America from India or Turkey or any other part of the world. That tariff has to be lifted, folks. So what I'm asking in this regard is that you buy whatever you can buy that's of value from Pakistan. I can assure you, whether it's marble, whether it's cloth, whether it's some forms of technology in terms of what is being made that comes here, make it a point to understand and look at the labels, and you'll see where that product is made when you go shopping again. And if it's made from Pakistan, I can assure you, you will not get a bad deal. God bless you all for being here. It's so nice to be with you. Thank you. Good evening. Assalamu alaikum. I am so pleased that I was invited to be here with you this evening. But before I share a few remarks with you, I've had the honor of sitting at the dinner table with someone that we should really stop and pay a lot of attention to. She was recently assigned here, and I want you to know that one of her responsibilities is to report on how Pakistani America here in America are doing. And so I want you to give another round of applause and have her stand up. Rafat Massoud, the Consul General that just got this assignment. She's here. She was formerly assigned to New Delhi in India, and so I'm delighted
to be seated at the table with her and to make her acquaintance. I am no stranger to conflict, no stranger to confrontation, no stranger to speaking up even when people don't want to hear me. So I will carry the message. I will be loud, I will be clear, I will be descriptive, and along with that, I'm going to do my little part, and I'm going to send my $1,000 to help the people of Pakistan overcome this terrible tragedy. Thank you all so very much. Ladies and gentlemen, we'd like to call up the U.S. Consulate General of Pakistan, the Honorable Rifat Masood, please. Thank you very much. Good evening and assalamu alaikum to my fellow Pakistanis and to my American friends. I'm really inspired by Dr. Tabani, who said that donor fatigue is a word that we should not talk about at all. That should be a word which is out of our vocabulary, because we really need to put aside our differences and come forward and help the people of Pakistan overcome this moment of trial that they are going through. So once again, thank you very much for giving me this opportunity to say hello to you and to come to your beautiful city. This is the first time that I come to the United States, my first visit to Los Angeles, and I must say that it is a great place. I'm beginning to enjoy my stay already, and I look forward to my tenure here. Thank you very much. American interest and stood up and took Afghani refugees. And if people can take that to serve humanity, then it is our duty to give them a drop in the bucket to help them in this natural disaster. They are the reason for our prosperity today. And I see also among Pakistani physicians, they are testimony to how Islam is the theology of life against the cult of death. And so they make us proud as American Muslims. Please to help us for humanity's sake, as Dr. Nair put it very eloquently, simple. $5, $10, $50. If you add the numbers, it can help to 20 million people who are totally affected and devastated. So we, as an American Pakistani community, request and plead to come up and help these people to turn back to their life. Thank you so much. Appreciate your help, and we'll see you tonight for the dinner. आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। लॉस एंजलिस के सबसे कदीम और सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर में 9/11 और कुरान जलाने को कंडम करने के लिए तमाम मज़हब के लोग जमा हुए, जिसमें क्रिश्चियन, जू, बुद्धिस्ट, हिंदू, सिख सब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, कुरान एक मुतबरक किताब है जिसको हम कदर की निगाह से देखते हैं। आज की इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में तमाम मज़हब के लीडर ने फ्लोरिडा के पादरी को खारिज करते हुए कहा, ये एक खुफिया एजेंडे पर काम कर रहा है जिसका मकसद अमेरिका को तकसीम करना है और दहशतगर्दों की मदद करना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और जू कम्युनिटी सख्त नाराज है और इसके इस नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। Compassion, mercy, inclusion, and peacemaking are the faces of religion that is love-based. Islam and all the religions represented in this room today are love-based religions. But against those who have lost sight of the religious freedoms that were so fundamental to our nation's founders. By organizations like yours, by congregations like yours, we hope to overcome and to defeat. It's a wake-up call for what this pastor has done. And millions of Americans now
hopefully will understand the beauty and the peacefulness of Muslims throughout this country. And people are no longer silent of prayer. I wish the world could see how we get along. That one man, one person is not going to divide us, not in this nation, not around the country. Muslims have been joined and supported by interfaith friends and secular opinion makers all over the country in gatherings much like this one. We have received support from politicians of all ranks, reaching up to the highest office. And we feel that even at the worst of times, we are still empowered by our faith and our constitutional rights to work towards achieving our goals. And when we heard of the proposed Quran burning on 9/11, all we could ask is, had they read the book they were going to burn? We are here to pray for America and for all our fellow Americans. We pray that we remain united, working together for the security, integrity, and prosperity of our country and for the good of all humanity. That the city of Los Angeles will let our light shine, that others may see the Christ in us, that our light may shine, that the world may glow and know that we live and work and love in unity. That sad memory of the crime of 9/11 is bringing the best out of us. In a loud outcry that this should not be exploited, it is criminal to exploit the agony and the fear of the American people for private agendas. Since 9/11, terrorism remains a significant threat to our national security, with the threat evolving and the violent extremists developing new tactics. But make no mistake, the threat is real, as we've seen with the many terrorist plots that have been thwarted this past year. This is why it is so important for all of us in law enforcement, the business community, and the community in general to work together to stop this dangerous threat. There's been a bond that has been built since 9/11 between our communities, and I think between many people. And yes, Buddhists do believe in something that Muslims believe in, and that is compassion, very much so. We were at Skid Row with a group of hundreds of Muslim youth that were feeding the poor and the needy and assisting them there. Well, now we're in a new challenge, and that is how to please God. God created all humanity, and all humanity is responsible for all humanity. And we in law enforcement are part of that humanity. And in our responsibility, we will be the leaders to protect the religious communities of this great country. So many groups from the Pakistani American Sheriff's Advisory Council, Waqar Khan, Pakistan Chamber of Commerce, Jamal Khwaja, the Pakistan CEO Forum, Asif Mahmood, and we have representative from Congresswoman Jane Harman's office, Rebecca Kin. आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान कौंसलेट लॉस एंजल्स में मौजूद हूँ और जैसे जानते हैं कि ये हमेशा एक दस्तूर है, जब भी हमारे कोई नए कौंसल जनरल आते हैं और चार्ज संभालते हैं तो जियो जो है सबसे पहले यहाँ पे मौजूद होता है ताकि हम अपने उन लोगों को बता सकें जो वेस्ट कोस्ट रीजन में रहते हैं और जिनको ये हैंडल करेंगी यहाँ पे। और ये हमारी नई कौंसल जनरल है रिफत मसूद साहिबा, और ये इंडिया में डिप्टी हाई कमीशन थी और वहाँ से तबादला होकर यहाँ पे आई हैं और ये बड़ी खुश नसीबी है। ये वाइड आई थिंक कौंसिल जहाँ पे ये तीसरी खातून जो है एज ए कौंसल जनरल आई थे। पहले आसमा अनीसा थी, आसमा अनीसा ना था, इससे पहले आसमा अनीसा थी, फिर राना रहीम आई और अब ये आई हैं रिफत मसूद साहिबा। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी मूड की मालिक लगती हैं और माशाल्लाह बड़ी तजुर्बेकार हैं, बड़ा वसी तजुर्बा है और काफ़ी मुल्कों में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। और अब ये एक ऐसे वक्त में आई हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को है जिसमें फ्लड विक्टिम पाकिस्तान के जो है वो सफ़र कर रहे हैं और आधा पाकिस्तान जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। बड़ी बड़ी तबाहकारियाँ आई हैं और इनको ये शी केम ऑन अ वेरी वेरी सेंसिटिव टाइम, वेरी चैलेंजिंग टाइम। डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान भी इनसे आस लगाए बैठी है और काफ़ी लोग भी आस लगाए बैठे हैं। आइए देखते हैं कि क्या कहती है और इनके क्या प्रोग्राम है आइंदा यहाँ पे लॉस एंजल्स के अंदर।
रिफत साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत खुशी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खुशी है माशाल्लाह, और लॉस एंजलिस में लोग बड़े मुतमईन हुए हैं कि आप यहाँ पे आ गई हैं। इससे पहले बहुत सी खबरें ऐसी आई थी कि शायद कौंसलेट यहाँ से मूव हो रहा है या तब्दील किया जा रहा है, और जब ये खबर आई कि जो साबिका मकान था सीजी साहब का वो भी फ़रोख्त कर दिया गया या वापस कर दिया गया है, तो फिर तो ये और यकीन हो गया था कि शायद अब यहाँ पे कभी कौंसल जनरल नहीं आएगा, और जिसके लिए यहाँ की आवाम ने बड़ी तौक़ की थी कि यहाँ भी कौंसलेट होना चाहिए। और जितने भी कौंसल जनरल आए यहाँ पे उन्होंने माशाल्लाह बेहतर और आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और हमारी कम्युनिटी ने भी उनका बहुत बड़ा साथ दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि आप ज़रा मुखातिब हो हमारे नाज़रीन से, और अपना तारुफ कराइए और उनसे कुछ कहिए कि आप क्या पैगाम लेकर आई और क्या आपका प्रोग्राम होगा आइंदा फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब, और बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो है ना ख़िताब कर सकूं और बात कर सकूं अपने पाकिस्तानी भाइयों से और बहनों से आपके ज़रिए, जियो के ज़रिए। ये मेरा पहला दौरा है, मेरा पहली दफ़ा मैं यूनाइटेड स्टेट्स आई हूँ। इससे पहले तो जैसे आपने कहा मैं हिंदुस्तान में थी, उससे पहले और जगहों पे, लेकिन अमेरिका में इत्तेफाक नहीं हुआ यहाँ पे सर्व करने का। तो मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है। हालांकि कम्युनिटी के साथ मेरा बहुत वसी तजुर्बा रहा है जब मैं और मिशंस में भी पोस्टेड थी, लेकिन यहाँ की कम्युनिटी के बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने सुना यहाँ पे कम्युनिटी बहुत जज्बा रखती है, बड़े जोश व खरोश के साथ पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है, उनकी वाबस्तगी है, और पाकिस्तान भी हमेशा जो बैरून मुल्क उनके पाकिस्तानी रहते हैं उनसे बहुत तवक्को रखती है। और जैसे मैंने एक इवेंट पे जिधर आप भी मौजूद थे ज़िक्र किया था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस मौके पे जब पाकिस्तान को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा अपने बैरून मुल्क बहन भाइयों की, तो वो जो है ना सारी अपनी जो हैं डिफरेंसेस हैं या जो उनके दिलों में जो ख़दशात हैं वो पीछे छोड़कर अपने मुल्क की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है जी। मैं यहाँ पे आई हूँ एज अ काउंसिल जनरल, और मैं यहाँ पे अपने आप को कभी एक अफसर नहीं समझती। आई एम अ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम हियर टू सर्व। और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी मेरे ऑफ़िस के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। जो भी मुश्किलात आपको पेश आएँ यहाँ की कम्युनिटी को, आई एम हियर टू लिसन, टू ट्राई एंड रिजॉल्व। जो मेरे बस में होगा मैं उसी वक्त कर लूँगी, जो मुझे मेरे बस में नहीं होगा मैं पाकिस्तान रेफ़र करके कोशिश मेरी होगी कि जल्द से जल्द जो ना जो भी कोई तकलीफ़ या जो भी कोई मसला हो पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी का, यहाँ पे मेरे लिए सारे पाकिस्तानी बराबर हैं, अमीर गरीब जो भी हैं सब यहाँ पे इस वक्त जफाकशी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मेहनत और मजदूरी से काम कर रहे हैं। बड़ा उन्होंने अपना जो है ना वक्त यहाँ पे गुजारा, अपना मुल्क छोड़ के परदेश में आए हैं अपना रोज़ी कमाने के लिए, और वो सारा जो है ना पाकिस्तान को भी उसका फ़ायदा होता है। तो मेरे लिए तो ये सब मेरे बहन भाई हैं पाकिस्तानी, और जो भी मुझसे हो सका तो यू विल फाइंड दैट द काउंसलेट जनरल ऑफिस विल ऑलवेज़ बी ओपन, विल ऑलवेज़ बी रेडी टू सर्व द पाकिस्तानी कम्युनिटी है। आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है। नादिन, ये सैक इंटरनेशनल कंपनी है, ये ओन बाय चौहान एंड कंपनी। पूरी फैमिली जो है इसके अंदर शामिल है। आप देख लें हज़ारों तादाद में यहाँ कपड़े हैं, फूड है, हाइजेनिक फूड है जो मोरमन चर्च ने यहाँ भेजा है, और तकरीबन पहली कॉल पे तकरीबन 700 to 800 वॉलंटियर शोड अप हियर, और उन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो पेश की। यहाँ से एक एक कपड़ा, हर चीज़ को ग्रेडिंग की जा रही है, कपड़ों को छांटा जा रहा है और कपड़ों को बैग में डाल के फिर उनको जो है प्रेस किया जा रहा है ताकि बेल्स बनाएं, और ये कंटेनर यहाँ रखे हुए हैं, इन कंटेनर में लोड करके ये पाकिस्तान हिदाया फाउंडेशन के ज़रिए पाकिस्तान में जो है तकसीम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये कि हिस्टोरिक मोमेंट है हियर इन लॉस एंजलिस कि इतनी बड़ी तादाद में जो वॉलंटियर जो है पूरी मसाजिद से यहाँ पे आए हैं और बड़ी दिलजमी से काम कर रहे हैं। My name is Sally Chauhan. I'm one of the main organizers for the event. What had happened was we heard about the news in Pakistan and we wanted to do something about it. And a lot of the organizations, they were only collecting
money and that was it, donations. So we wanted to do something where people felt more hands-on. So we decided we would collect clothes, blankets, tents, food, everything that people of Pakistan would need. And so far this is what we have. We have, alhamdulillah, a lot of volunteers. I threw this online, made an event, and from there I was only hoping to get 50, 60 volunteers. Instead, we ended up with almost 800 people who were donating. 800 people responded for your request. Yes, more than 800. Yes, about 870 people total who either donated money, donated items like clothes. We easily have over 300,000 pounds of clothing right now. How much? 300,000 pounds of clothing, food. 300,000 pounds of clothing. Yeah, clothing, food, shoes, everything total. Okay. So basically we've just been working on sorting it. So over here we have people just sorting them into bins. Okay, and these are the bins that they're being sorted into. Then they get taken and they're compressed, so that way we could fit as many clothes in each container. Okay. Yeah. Well, mashallah, we are very blessed that we have an opportunity to help our people in Pakistan. Although we have been very honored to help many other occasions like Katrina and earthquake in Pakistan and Haiti. But this is, as everybody knows, this is probably one of the biggest ones, and it touched our heart. पाकिस्तान में इसको तकसीम किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो गई है और अपने भाइयों की मदद के लिए तैयार है। वकार अली खान रिपोर्टिंग फ्रॉम लॉस एंजलिस, जियो न्यूज़। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान। और सिर्फ एक ही पैगाम है, आगे बढ़िए, मदद कीजिए, मदद से अपना हाथ ना रोकिए उन परेशान और तबाहाल भाइयों के लिए जिनकी निगाहें और जिनकी हाथ आपकी तरफ उठे हुए हैं। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान कोऑर्डिनेटिंग अ वेरी बिग मेगा टेलीथॉन जो है वो इंशाअल्लाह ताला नवंबर में आ रही है और लॉस एंजलिस में होने वाला फंड रेजिंग इवेंट निहायत ही कामयाब रहा। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम देखते रहेंगे और हमें मशवरे देते रहेंगे ताकि हम आपके साथ साथ रहें और आपके मशवरे के मुताबिक आपके लिए खूबसूरत और बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर जगह हर पल आपका अपना सफ़ीर पाकिस्तान नज़र आता है।